Hello friends, welcome to our new video. In this problem, we are going to see the one recursion problem. Okay, before that, if you guys are new to our channel or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you will get the notifications of our new videos. Okay, so the today's problem is increasing sequences. Okay, these are the problem. Okay, and here we have given some problem statement. The problem statement is Bob loves strictly increasing sequences, but he has elements between 1 and m. Okay, and so he wants to find all strictly increasing integer sequences of length n having all elements between 1 and m. Okay, in lexically ascending order. Okay, and here we have given input, that is two integers n and m, and we have to print the sequences in lexically ascending order. Okay, uh, and here we have given some sample inputs. Okay, and we have to print the increasing sequences. Okay, like this. Okay, and here are given some explanation for this. Okay, okay, so this is an recursion problem, and in this problem we have to print the increasing sequences. Okay, and here we have given two positive integers. Okay, that is n and m, and we have to print all the increasing sequences of length n such that the elements in every sequence are from the first n natural numbers. Okay, so यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको सीक्वेंसेस प्रिंट करना है, जो हमको लेंथ दिए है वो लेंथ की हमको इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस प्रिंट करना है. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट n एंड ये m है. सो n इज फॉर लेंथ एंड m इज द नंबर ऑफ एरेज वी हैव टू प्रिंट. ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है इसमें, ये प्रॉब्लम में ये हमको यहाँ पे एक लेंथ दी है और यहाँ पे एक इंटीजर मतलब एक नंबर दिया है. ओके, यहाँ पे एक हमको लेंथ दी है और एक नंबर दिया है. तो इस प्रॉब्लम में हमको एरेज प्रिंट करने हैं जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस में रहेंगे. ओके, तो एरेज कैसे प्रिंट करना है, जितनी हमको लेंथ दी है वो उतनी साइज के हमको एरेज प्रिंट करना है. लेट सपोज यहाँ पे लेंथ है 2 दी है, 2 दी है, तो 2 नंबर्स तक ही हमको एरेज प्रिंट करना है. और कितने एरेज यहाँ पे प्रिंट करना है, 3 एरेज प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिए है नीचे. दो लेंथ एरे की 2 है और कितने हमको एरेज यहाँ पे प्रिंट करना है, 3 प्रिंट करना है. ओके, और सेम यहाँ पे इस एग्जांपल में भी देखो, सैंपल इनपुट में यहाँ पे हमको लेंथ 3 दी है और हमको ये कहाँ तक हमको प्रिंट करना है, 5 नंबर तक. ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे 3 नंबर लेंथ 3 एरे की है और जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो 5 तक हमको जितने भी मतलब एरेज रहेंगे वो हमको प्रिंट करने हैं. और वो कैसे प्रिंट करने हैं, लेक्सिकली असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है. ओके, सो here we have to create an array of length n. Okay, which stores the current sequence. Okay, n लेंथ के arrays create करना है जिसमें हम current sequence store करेंगे. Okay, and for every position in the array we have to check the previous element and the one
by 1 put all the elements greater than the previous element. Okay, and if there is no previous element, suppose the first element, so the first element does not have a previous element, so in this case we have to put all the numbers from 1 to n. Okay, okay, these are the problem. So let's try to code this problem. Okay, so ओके, सो यहाँ पे अभी ये रिकर्जन का प्रॉब्लम है करेंगे, क्योंकि जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, वो प्रिंट करने के लिए हमको एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो जो ये जो सीक्वेंस है वो प्रिंट करेगा, उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और एक हमको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि प्रिंट करेगा एरेज, जो कि 0 to n-1 तक जो भी रहेंगे वो प्रिंट करने के लिए वो एक हमको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक, यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करते हैं हम। तो पहले हम स्टैटिक वॉइड और एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसको नाम देते हैं हम प्रिंट प्रिंट ओके, सपोज इसको नाम देते हैं रिकर्सिव प्रिंट सीक्वेंस। ओके, सो ये नाम देते हैं हम इस फंक्शन को, और इसमें हम क्या पास करेंगे इस फंक्शन में, एक लेंथ इंटीजर n, देन इंटीजर। ओके, इसमें हमको क्या पास करना पड़ेगा, जो एरेस की वैल्यू है वो पास करेंगे हम यहाँ पे। फिर जो उसकी लेंथ है वो एक यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद एक हम लेंथ पास करेंगे यहाँ पे, लेंथ वेरिएबल। ओके, लेंथ ये करने के लिए, और एक एरे पास करेंगे, इंटीजर एरे। ओके, ये फंक्शन हमने रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट किया जो जो प्रिंट करेगा जो भी सीक्वेंसेस है वो प्रिंट करने के लिए हमने ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन डिक्लेयर किया। और इसके बाद हमको और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ऑल सीक्वेंसेस प्रिंट करेगा, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं स्टैटिक वॉइड, और उसको नाम देते हैं प्रिंट सीक्वेंस। ओके, प्रिंट सीक्वेंस नाम दिया हमने उस फंक्शन को, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे इंटीजर जो नंबर और उसकी लेंथ n। ओके, सो ये हमने क्रिएट किया। फिर उसके बाद और एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो प्रिंट करेगा एरेज, एरेज को प्रिंट करेगा 0 से n-1 तक। ओके, सो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट, उसको नाम देते हैं प्रिंट एरे, एंड इसमें हम पास करेंगे एक एरे पास करेंगे। ओके, देन उसकी लेंथ पास करेंगे।
जो है n। ओके, ये हो गया। ये हमने तीन फंक्शंस हमने क्रिएट किए। अभी हम ये जो तीन फंक्शंस हमने क्रिएट किए उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव सीक्वेंस जो भी हमको प्रिंट करना है उसका रिकर्सिव फंक्शन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, इफ जो लेंथ रहेगी एरे की, ओके, इफ लेंथ इक्वल्स टू n, ओके, देन इफ लेंथ इज इक्वल्स टू जो भी हमको साइज दी है वो एरे की जो हमको प्रिंट करना है उसके अगर इक्वल रहेगी, तो हमको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एरे को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ये फंक्शन पास करेंगे। ओके, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन हम लेट सपोज प्रिंट का फंक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एरे को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे। ओके, फिर इसमें लिखेंगे इंटीजर I इक्वल्स टू 0, देन I इज लेस देन n एंड I प्लस प्लस। ओके, सो हमने यहाँ पे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एक फंक्शन फॉर लूप लिखा। ओके, अभी इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम एरे ऑफ आई प्रिंट कर देंगे एरे को। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश एन पास कर देंगे जो एक न्यू लाइन ये कर देगा। ओके, सो ये हमने एरे को प्रिंट करने के लिए फंक्शन लिखा। अभी हम रिकर्सिव फंक्शन को ये रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, प्रिंट एरे को, अगर लेंथ जो है इक्वल्स टू एन रहेगी तो सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर देंगे ये प्रिंट एरे फंक्शन को। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट एरे लिखेंगे और यहाँ पे पास करेंगे एरे, और जो भी लेंथ है वो पास कर देंगे। ओके, एंड हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, ओके, we have if length equals to 10, we have written this. Okay, now we have to write here something to decide the first point to put the current position. Okay, तो उसके लिए हमको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक इंटीजर I इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 0। if length is equals to 0, then here we have to write one. We are writing conditional statement. Okay, so if length equals to 0, then we have to return 1,
or we have to, here we have to write array of length minus 1. Okay, array of length minus 1 plus 1. Okay. Okay, here we have written one conditional statement. Okay, now simply after that we simply increment the length. Okay, so here we'll write length plus plus. Okay, so after that we have to write the condition to put all the numbers which are greater than the previous element at the new position. Okay, so हमें अभी यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो भी एलिमेंट्स ग्रेटर रहेंगे प्रीवियस एलिमेंट से वो हमको पुट करने के लिए यहाँ पे हम एक while कंडीशन लिखेंगे while and inside that we'll write I is less than n जो कि साइज है अब और इसमें हम लिखेंगे while लूप में array of length minus 1 equals to I. Okay, and here we have to this is an recursive function, so we'll call this function recursively. Okay, so we'll call this function recursive print sequence, and inside this function we'll pass the arguments. Okay, so we'll pass first number, then length m comma n comma, then length, we'll pass the length variable. After that we'll pass the array. Okay, we have called the recursive function, then we increment the I. Okay, and then now we'll write length minus minus. Okay, okay, so we have written the recursive function. Okay, now we have to complete the second function, that is print sequence. Okay, so in this function simply we'll declare one array. Okay, integer array equals to new int, and we'll pass the length of the array in it. Okay, we have created this array to store the individual sequence. Okay, now let's declare one variable to store the initial. Okay, integer length equals to 0, and simply we'll call this function. Okay, okay, so we'll call this function print sequence, and in this
Not this one. Uh, recursive function. What is recursive print sequence? Okay, recursive print sequence. Okay, and in this we have to pass the m comma n comma length, then array. Okay, we have called the recursive function inside this function. Okay, okay, now we have completed this function. Okay, now here we'll write one scanner class to take the input from user. Okay, so scanner sc equals to new scanner, then system dot in, and we have to take the two integers. Okay, so we'll write integer m equals to sc dot next int. Okay, next int, and integer n equals to sc dot next int. Okay, we have taken the two integers as an input. Okay, now we have to call the function. Okay, so we'll call this print sequence function. Inside this function we have, इस फंक्शन के अंदर हमने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है. ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे. ओके, सो प्रिंट सीक्वेंस, और इसमें हम पास कर देंगे m और n. ओके ओके, तो ये हमने कोड रिटर्न, ये हमने कोड कंप्लीट किया है. अभी इसको रन करके देखते हैं. ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन रन. Now our program is running. Let's see. Okay, here we have to write the packages, that is import java.io.star, then import java.util.star. Okay, so now we'll try to run. Okay, now our program executes. Now let's try to give the inputs. So first, our first, let's see, our first test case is, this is our first test case, 2 and 3. Okay, so we'll give the input. Okay, let's run. And our first test case is 2, length 2 and 3. Okay, and let's see what it is showing. Oh, it's showing nothing. Okay, so okay, why our output is showing nothing here? Okay, let's see. Here we have run the print function. Okay. Recursive print sequence function.
Okay, integer I, length. Okay, print then I. Okay, length. Okay, I is less than and oh. Okay, so we have made a mistake here. That is, we have written I is less than n. Okay, here we need to write I is less than equals to m. That one. Okay, to print the array of this integer. Okay, now let's try to run. Okay, I'll give the input, that is 2 and 3. Okay, and okay, now the output is showing, but the each number is showing in a separate line. Okay, but we need the output like 1 2, then 1 3, and then 2 3. Oh, sorry, 1 3, then 2 3. We require the output should look like this. Okay, so we need to check in the print function. Okay, so here we have written the for loop and we have written the print. Okay, after going in this loop, once the number is printed, there is new line is printed. Okay. uh, we'll see to remove this curly braces, and now we'll see how the output shows. Let's run. We'll give the input, that is 2 and 3, and run. Now you can see the output is showing correct. Okay, now let's try to run the second test case. Okay, the second test case is 3 and 5, and the output should look like this. Okay, so we'll run again and give the input, that is 3 and 5. Okay, so in this input we need to print the arrays of length 3. Okay, in increasing sequence. Okay, so you can see that here the length 3 array is printed. Okay, that's it. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।